Well, the Congress versus Congress war is out in the open once again, with Congress MP Manish Tiwari now hitting out at former Punjab Congress in charge Harish Rawat for the prevailing political situation in the state. Manish Tiwari has said that in his 40 years of political career, he has never seen this kind of anarchy playing out in Punjab. He also slammed the appointment of the committee, saying that it is a serious error of judgment. He's taken to Twitter to hit out at Harish Rawat, and he says, and I quote, "However, in my 40 years plus in Congress, I have never seen such chaos and anarchy as what is playing out in Congress Punjab today. Repeated open defiance of AICC by a PCC president, colleagues squabbling publicly with each other like children, guttural language against each other that even fishwives would not use. And for the past 5 months, it is Congress Punjab versus Congress Punjab. Do we think that people of Punjab are not disgusted by this daily soap opera?" This is something that Manish Tiwari has now put on Twitter by saying that irony is that those who complain loudest of transgressions and aberrations were unfortunately and continue to be worst offenders themselves, essentially exposing all that is going wrong within the Punjab Congress, and also talking about how there is no progress on the issues that agitated the MLAs and other eminences, talking about several of those issues and saying that there has been no forward movement yet. Tarun Chugh, BJP leader, is joining us on the phone line. Mr. Chugh, good morning to you and thank you for speaking to us on Republic TV. But, you know, that's what we've been trying to say ever since the whole Captain versus Navjot fiasco first erupted, following which there was so much confusion going on about who will be the next chief minister, and then Navjot Singh Sidhu deciding to step down as the PPCC chief. You know, so much drama has been going on, but look at Manish Tiwari now hitting back at what Harish Rawat has said and saying that he's never seen this in 40 plus years of his political career, and that's the reality today on ground. दुर्भाग्य है कि पंजाब जैसे एक सीमावर्ती क्षेत्र को, ऐसा प्रांत जिसने बॉर्डर बिल्कुल साथ लगता है, वहां एक मस्करे के हाथ में कांग्रेस की कमांड चली गई है, एक कमेडियन के हाथ में कांग्रेस की कमांड चली गई है, और वो कमेडियन जैसे कांग्रेस को नचा रहा है। और दुर्भाग्य है कि उस स्टेट जिसका बॉर्डर बिल्कुल लगता है और ऐसे व्यक्ति को निर्णय लेने के कह दिया गया जिसके पाकिस्तान के साथ जो संबंध हैं, जो उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आईएसआई जो कि भारत में उग्रवादी घटनाएं कराती है, उनके साथ उसके गले मिले की फोटो, उनके संबंध और खुलेआम वो इमरान खान की मार्केटिंग करते हैं। ऐसा व्यक्ति आज पंजाब को चला रहा है, ये दुर्भाग्य है। और जो आज मनीष तिवारी जी ने बात कही है वो भी बिल्कुल ठीक है कि आप एक फौजी के हाथ से कमांड खींचकर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमांड दे दीजिए जिसको कोई तजुर्बा नहीं है और जिसका व्यक्तित्व और जो उसका इतिहास है वो संदेहों से भरा है। और ये सेल्फ गोल कांग्रेस ने खुद किया है, और कांग्रेस के जो ग्रुपिज्म है इस समय हाइट पर है, और ये ग्रुपिज्म इतना हाइट पे है कि वहां पर सरकार पिछले 9-10 महीना से खाना जंगी में फंसी है। सरकार के प्रतिनिधि यहाँ तो दिल्ली में मंत्रालय खाली पड़े हैं, कोई निर्णय नहीं हो रहा। और अब तो नवजोत सिंह सिद्धू जी को परफॉर्म करके दिखाना चाहिए। उन्होंने एक भी, अभी तक 1 महीना हो गया सरकार बनी को, एक भी मैनिफेस्टो का वादा पूरा नहीं किया है। और आंतरिक लड़ाई इतनी ज्यादा है और ऐसी स्टेट में है जो स्टेट एक बॉर्डर एरिया है। जी, all right. Tarun Chugh ji, thank you for speaking to us. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए and putting that into perspective. That's a BJP reaction essentially there. But yes, now you have a Congress leader, Manish Tiwari, who's now speaking out against the party and the misjudgments essentially, because there is certainly a collapse within the party. The leadership is not emerging strong enough, and that is what Manish Tiwari is trying to highlight when he puts out that tweet. For the moment, we move on.